नेगोशिएशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि आज की डेट में सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रस्ट मी एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी आर ऑलवेज नेगोशिएटिंग इन वन वे ऑन अदर। फिर चाहे वो किसी लोकल शॉप से बार्गेन करते टाइम हो, या फिर अपने फ्लैट के ओनर से रेंट डिस्कस करते टाइम हो, या फिर अपने मैनेजर से किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को एक्सटेंशन को लेके हो। और ये नेगोशिएशन स्किल्स और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब बात अपने HR मैनेजर से अपनी सैलरी डिस्कस करने की हो, बिकॉज आफ्टर ऑल नो वन वांट्स टू बी अंडरपेड, राइट? एंड दैट इज व्हाई in today's video the team AmbitionBox has brought you 4 important tips that will help you in your next salary negotiation round, so that no HR can offer you a lower salary than you deserve. And trust me, the 4th tip is most important, so make sure you watch the video till end and press that subscribe button for more such helpful videos. With that being said, let's start the video. फर्स्ट टिप फॉर यू वुड बी दैट यू शुड नो योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू एज इन यानी कि आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, साथ ही साथ आप जितने साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, उसके बेसिस पे व्हाट इज द आइडियल सैलरी रेंज ऑफर्ड इन द मार्केट। यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सो दैट यू कैन नेगोशिएट बेटर विद द HR. एंड फॉर दिस यू कैन ऑल्सो यूज अ वेरी ओन प्लेटफॉर्म AmbitionBox एज वेल, वेयर यू कैन चेक सैलरी डेटा फॉर मोर देन 50,000 प्लस डेजिग्नेशंस, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, एक HR ने आपको 7 LPA ऑफर करने का ट्राई करा फॉर अ पर्टिकुलर जॉब रोल, बट आपने AmbitionBox के पोर्टल पर जाके या फिर किसी अदर रिसोर्स पर जाके ये चेक करा कि उस जॉब रोल की जो आइडियल मार्केट वैल्यू है वो 8.5 LPA तक की है। देन ऑन बेसिस ऑफ दिस डेटा यू कैन नेगोशिएट बेटर विद द HR टू ऑफर यू अ हायर सैलरी पैकेज दैन द प्रीवियस ऑफर। वहीं पे अगर आप बिना इस डेटा के नेगोशिएट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नेगोशिएशन एक फ्रूटफुल नेगोशिएशन नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू नो योर मार्केट वैल्यू बिफोर एंटरिंग इनटू अ सैलरी नेगोशिएशन. So our next advice for you would be that you should know your weaknesses. हाँ जी, knowing your weaknesses is as equally important as knowing your market value, because during the final discussion round, the HR can try to offer you a lower salary based on multiple parameters. वो कह सकते हैं कि आपकी previous salary काफ़ी ज़्यादा कम थी, या फिर आपका experience बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आपने काफ़ी सारे frequent switches करे हैं, या फिर they know that you are on notice period and you desperately need this job. Based on these multiple factors, they can try to offer you a lower salary package, and that is why it's always better to list all these things which can go against you during the discussion and prepare for their answers beforehand. After knowing your market value and your weaknesses, the next important thing to do is know your company well. The main motive is to collect as much information as possible before the salary negotiation round. Information like their work culture, do they provide work from home or not, and what are the employee benefit policies they provide. And for this, you can connect with the HR, or you can also connect with some current as well as former employees of the company. Or you can also read the reviews on a platform AmbitionBox to know how their employees feel about the company. Now let's take 2 scenarios. Suppose after reading the reviews you figure out that the company is good for you, then you can also be a little bit flexible during the salary negotiation round. Whereas if you figure out that the company has a lot of negative reviews, then you can also be a bit rigid as well as demand for a higher salary during the negotiation round. And finally, and most important tip, create a win-win situation. The objective here is to have a long-term healthy relationship between you and the company. सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करते करते आपको ये नहीं करना है कि कंपनी को डील ओवरऑल अनफेयर लगने लगे. And that is why try to think from the other person's perspective as well during the negotiation round. Now for example, अगर HR बार बार during the discussion ये कोट कर रहा है that they have budget restrictions, then they might actually have budget restrictions, and that is why instead of being too rigid on increasing the fixed salary component part, you can be a bit flexible and ask for other variable components like adding some ESOPs or a relocation bonus or a joining bonus to make the deal overall win-win for both the parties. So yes, ये थे कुछ tips AmbitionBox team की तरफ से to help you in your next salary negotiation round. Do apply them and let us know if they helped you or not. We will be back with yet another career empowering video. Till then, like, share and subscribe.